Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, in today's session, guys, we'll solve one exercise based on whatever knowledge we have gained till now, like basic how to create table, how to insert records in it, related to data types. We have knowledge about data type, then retrieving distinct values, sorting, right? Limiting, then some operators knowledge we have, arithmetic operators, then relational operators, logical operator, membership, like, between, null operator, all that. And then about aggregate functions, and we have knowledge about group by and having. So based on this, one exercise will implement, and then we will, after completing this, then we will move to another topics. There are many more difficult topics in this whole course. Okay. So you can just go through this. This file I have already shared in the group. You can just check that. So you are tasked with building and managing the database for a text store. Text store means it is storing all it is selling all technology products. You can say like that. Okay, so technology products means I hope you understand, like earpods and TV and mobile and all such things. Okay, you will create the tables, enforce integrity with keys like foreign key, primary key, unique key, check constant, not null, all the things we have learned. Then in that table, we will add some synthetic data, artificial data, that is populate the tables with data, modify the structure and run the queries using different operators. Okay. Now what those tables are? These tables are given here. See, there is one table called customer table with customer ID, first name, last name, email, joining date, membership status, which can be any one of this VIP, regular, premium. Okay. Means that membership status is any of these three. So while creating table, we have to enforce these conditions. That check whether the membership status is from VIP, regular, premium. Okay. Then there is product table in which we will be keeping information about the product ID, product name, the category of the product, price of the product, stock quantity, and the customer places order for that product. So there is one orders table, and orders table is having a relation with customer and product. Okay. Like if I show you in a pictorial way, this is your customer table, and we have one product table, okay, in which information about what is kept product in this customer information, and then one table will be there called order table, okay, in which the details about the order which the customer places for that product. Means customer can place multiple order, means one customer can place multiple order, and for one product also there can be multiple orders, but in one order only one product. Understanding? So here there is a relation between the customer and the product, and there is a relation between order and the product. Getting? So customer is placing the order for that product, but remember, one customer can place many orders, and for one product also there can be many orders. Means the same product can be in multiple orders. Because if I've ordered TV, the same TV someone else can order. So the same product can be there in different orders. And the same customer can place multiple orders. Getting? So whenever there is a relation between one to many, like this, one customer places many order. One product can be in many orders.
then always the primary key of that one is put into many. So customer ID you'll keep in the order, and the product ID also you'll keep in the order. That becomes foreign key. So I hope you know about foreign key. We have learned all this concept, foreign key and primary key. You remember, no? Foreign key is a column in one table. In some table, it is a column, but it is referring its values from the primary key of some another table. किसी और टेबल के प्राइमरी की को ये रेफर कर रहा है, मीन्स इसमें जो वैल्यूज है वो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की से लिए गए, तो इसको हम फॉरेन की कहते हैं. तो हियर देयर विल बी अ फॉरेन की इन ऑर्डर टेबल. हु? प्रोडक्ट आईडी. Here the product ID is referring the product numbers from product table, and there will be customer ID also as a foreign key. Okay? So the relation is like that, as I have shown, and that is shown here also. They have given it to you, and if you want a ER diagram to be drawn, you can just paste these table structures. Okay, here you can paste it, sorry, copy it, and then you can paste it in your any AI tool. You take ChatGPT, you take Gemini, whatever is comfortable for you. Whenever I paste here, I'll just ask to it that please draw ER diagram. ER means entity relationship diagram. Okay. It will just draw one ER diagram for you. And in that diagram only, you will come to know how the customer is related to order and how the product is related to order. Meantime, it is getting drawn. You can check. See, they have told to create a customer table with customer ID, first name, last name, email, joining date, membership status. Then create one product table with product ID, product name, the category of the product, price of the product, and stock quantity. And this customer is placing order for the product. Who is going to place the order? Customer. And customer places the order, but for what? For the product. So here we have order ID, order date, how much is the amount of that order, how much quantity is ordered of that product, and these two important things are there in this order. This is the order placed by this customer, and it is the order for this product. Understanding, guys? This is the order which is placed for this product and for this customer. Means who has placed that order? Customer has placed. So that customer ID is maintained in that order ID. And that order is for which product? Therefore, product ID is maintained in that order table. Understanding? Like suppose you have customer one, customer two, like that many customers are there. And suppose you have products like this, product one, product two, going on. So suppose you have order one, here customer two, and product one, and then the date and the amount, everything is there. Now from this, what we come to know that order one is placed by the second customer for product one. Again, second order can be there. Chances second order is also placed by customer two only for product two. Understanding? This way it can go on. So in every order, we have to maintain that that order is placed by which customer and for which product. ये ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस किया एंड किस प्रोडक्ट के लिए प्लेस किया. So this customer ID and the product ID is the foreign key in orders table. ठीक है? So that part is clear, I guess. If it is clear, the relation between these three tables, you can just give me quick confirmation so that we can start solving the queries which they have given. ठीक है? See, you can see how beautiful diagram it has drawn. Can you see this is the customer table
with customer ID, first name, last name, email, joining date, membership status. ठीक है? There is a product table with product ID, product name, category, email, and stock quantity. And this is the order table. And there is a relation between customer and order and product and order. Meaning this order is placed by that customer and the order is for that product. ये ऑर्डर किस प्रोडक्ट के लिए है एंड किसने प्लेस किया. तो यहां रिलेशन भी देखो कैसे है. वन कस्टमर कैन प्लेस मेनी ऑर्डर्स एंड वन प्रोडक्ट कैन बी इन मेनी ऑर्डर. देयरफॉर प्रोडक्ट का जो प्राइमरी की है वो यहाँ फॉरेन की है एंड कस्टमर की जो प्राइमरी की है वो यहाँ फॉरेन की है. ठीक है. तो कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की आई होप यू रिमेंबर. आई हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट कैस्केडिंग रूल्स. अटेंड किया है तो मुझे यस नो तो बोलो. मैंने उसके कैस्केडिंग रूल्स बताए थे. ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट और ऑन डिलीट सेट नल. कुछ याद है या नहीं? एटलीस्ट यस नो तो बोलो. याद नहीं Yes. है तो हाँ. याद नहीं है तो नो तो बोलो एटलीस्ट. ओके. अदिति इज रिमेम्बरिंग बिकॉज अदिति हैज नेवर स्किप द सेशन. है ना? एक बार भी सेक्शन स्किप नहीं किया. तो ऑब्वियसली यू विल रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स. तो दिस डायग्राम यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल एआई ने जनरेट करके दिया है ये डायग्राम. यहाँ एसोसिएशन भी दिया है देखो. इट इज वन इज टू मेनी. तो वेनेवर एसोसिएशन इज वन इज टू मेनी, वन की जो प्राइमरी की होती है वो मेनी में एज अ फॉरेन की बन जाती है. ठीक है. ओके. नाउ दिस पार्ट इज डन. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. एक एक करके देखो क्विकली. मीन टाइम आई स्टार्ट माई स्क्यूल. ओके. माई स्क्यूल वर्कबेंच शुरू कर देता हूँ. ये क्यों? ओह, वेरी सॉरी गाइस. मैंने क्या किया आज? इंस्टॉल ही. आई डिड अनइंस्टॉल. अनइंस्टॉल किया. ठीक है. Meantime, you go on reading these questions. Quickly, I'll install it. Don't worry. Meantime, मेरे machine में वो quickly install कर देता हूँ. I have to go to my skills website. Okay. Downloads. Today only for other batch ना. मुझे दूसरे बैच का इंस्टॉलेशन दिखाना था इसलिए मैंने डाउनलोड अनइंस्टॉल करके रखा. And then I forgot. Now, first workbench है. पहले हमें कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल करना है. I'll take this long. अब ये न्यू वर्जन भी आ गया. I'll take this 8 point and I'll download this. ठीक है. It's going on. Meantime, you can read the questions. First question and you can start implementing it. ठीक है. आप साथ साथ implement करना शुरू करो. First question देखो क्या है. Write a query to create customers table. Okay. With customer ID as a primary key and give it as auto increment. So if you give it as auto increment, when you're inserting the customer record, you don't have to give customer ID. It will take automatic the next number. First will be having one, then two, three, then first name and last name. Non-nullable text means you can take varchar and give condition not null. Constraint. Email, you can give varchar, whatever you want. Constraint, unique. Then joining date, which is default to current date. And one more is there, no, membership status that we forgot. तो इसमें एक membership status भी add करना है with three things: VIP, regular, premium. You will add that check clause, that check membership status is from this three only. ठीक है. तो try. Meantime, let's see whether you are able to do it or not. टेबल क्रिएट कर लो तुम लोग. ठीक है. Meantime, here my installation will go on. ठीक है. Please do it. Don't wait for me.
एंड कॉन्फिडेंस नहीं है तो कमांड लिख के रखो और एग्जीक्यूट करने के पहले वेट करो फॉर मी देन. ठीक है. मीन टाइम विल जस्ट डाउनलोड वर्कबेंच एज वेल. क्रिएट अ डेटाबेस एज यू आर सॉल्विंग दिस न्यू क्वेरी न्यू एक्सरसाइज. तो एक नया डेटाबेस क्रिएट करो. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स स्टैंडर्ड आई कीप. ऑल दिस थिंग्स आई हैव टॉट यू. मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ एज रूट. रूट. वी डोंट वांट एनी सैंपल डेटाबेस. ठीक है. दिस विल बी कंप्लीट. देन आई स्टार्ट विथ वर्कबेंच. ठीक है. ओके. तो ये मेरा काम चालू है. तब तक आप लोग उधर क्रिएट टेबल का कमांड लिख के रखो. कॉन्फिडेंस नहीं है तो सिर्फ टाइप करके रख लो एंड फिर क्रॉस वेरीफाई करो व्हाट आई एम गोइंग टू टाइप. Same way, try for the next table also. Write a query to create products table with product ID as the primary key, then the product name, which should not be null, then the category of the product, price, and stock quantity. ठीक है. एंड यहां भी आपको कैटेगरीज देने हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज. ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज. तो कंडीशंस दे सकते हो. नहीं लिखना है तो लीव इट. एंड सेम वे क्रिएट अ थर्ड टेबल कॉल्ड ऑर्डर्स टेबल with order ID as a primary key, and it will have these two things as a foreign key. One is a customer ID and another is a product ID. Order date, quantity, and total amount. Okay. First, these three create table commands we have to successfully do it. Then we will add records in it. Okay. Now here they have said add 5 records, but we will add some more records to get good output of our queries. अपने queries का output एकदम perfect आना चाहिए. Good analytics should be done. Then you have to add ample number of records, and these records will generate synthetically through AI. I'll tell you how to do it. Before that, this create table. But meantime, I'll do the installation. I'll complete this installation. Workbench also I'll complete. Okay, to just give me confirmation. You're trying with those commands. Create table. Yes or no? At least yes, no bolo. No to no problem. No bologe to bhi no problem. No? Aditi and Ankit and others, those who have joined. No? Create table customers. Create command is there. What you're creating? Table. Which table? Customers table. Then round bracket. Then the first field is customer ID. Okay. With constraint as customer ID integer auto increment primary key. Then first name varchar 50 you can give not null. Last name varchar 50 not null. Email 100 you can give, and you can give unique. Means you can leave it blank. Not necessary email should be given, but it should be unique. Then joining date. Joining date you will give date and time. And what will be the default value? Current date. Now how to give that current date and time? I'll show you. Don't worry. Default they're saying. Like if you don't give the joining date, automatic it will take which joining date when the customer record was added. जब कस्टमर रिकॉर्ड ऐड होता है तो उसी समय का डेट टाइम लेगा एंड देन मेंबरशिप स्टेटस. ठीक है. लेट मी चेक.
ठीक है, तो एटलीस्ट कोई एक तो बोलेगा कि यस किया है, मैंने ये टेबल क्रिएट किया है। नो, एक तो बोलो एटलीस्ट, यस नो बोलो। नो तो नो बोलो, यस तो यस। Sure, half it is done. This part, first question. Yeah, sure. No problem. If you are not confident, don't execute it. Just wait for my answer. But try it. Same way, try, meantime, try for creating products table also. Products table with product ID, product name, category, price, stock quantity. Actually, because of this, this got delayed. Otherwise, till now, we would have completed with this three things. And all the queries are basic queries. Yeah? Till whatever we have learned. जो भी अब तक सीखा है, operators and all, based on that only. Then afterwards, when we will learn join types and window functions, then some more difficult exercise also I'll share you. Okay? And such more exercises for your practice also I'll give you. Don't worry. Okay? As much practice you do, you will be more confident. SQL is that only. SQL सब उस पे ही based है. ठीक है, I'll just connect and create a new tab, new query tab. Okay. First step is you create a database, guys. Okay. I hope you can see this. So create database and give any name to the database as Smart Text Store. So Tech Gazette DB. Up to you what name you want to give. Okay. So I'm giving. It is case insensitive. Tech Gazette DB record. Okay. Database is created. You have to use it. So the Tech Gazette DB. Okay, guys. At any point, if you are facing any problem, you can ask me. Now, first table we have to create. Okay. This is the table. So you can just copy these fields so that it will be easy for you. Already the file is shared, so I think so you won't be facing any problem. Okay, I'm going to create table, customers. First field is customer ID. Okay, it is integer, primary key, auto increment. Then comes first name, varchar 50 I'll give, not null. You're not allowed to leave it blank. Last name, varchar 50 only I'll take. That too I'll put not null. Email, they have said, okay, I'll take varchar 100 and unique I'll add. All the constant types we have learned, guys. बोलो मत हाँ ये सब कहाँ से कम कैसे. तो अपना पूरा टॉपिक हो गया ऑन कंस्ट्रेंट्स. देन स्पेशली एक सेशन सिर्फ प्राइमरी की फॉरेन की पे चला गया. एंड फिर कैस्केडिंग रूल्स क्या होता है. ऑल इन द पास्ट सेशन वी हैव डन. So joining date, I'm giving date and time, suppose. Okay. And default value, you can keep as current timestamp. Last is this current timestamp is a function of MySQL. So by default, it will take the current date and time. Okay. And next is membership status. We'll give like this. Where care, instead of where care, we can take care because the characters are fixed. No? 3 and 3, 6, 7 only. This is also 7. So maximum it is 7. I'm putting it as 10.
Okay. And here we'll put a check clause like check membership status in and in this list. Means it will always confirm that whatever membership status is given to the customer, it should be from these three values only. Okay? See, try to get the brackets properly. This is the bracket from the beginning, right? This check constraint, if you're not able to see it, I'll just press tab like this. This is a check constraint applicable for membership status. Okay? So just confirm whether you have tried near about same. कुछ लोगों ने 100% बराबर किया था और नियरली सेम थोड़ा सा चेंज हुआ. यस और नो. यस नो बोलते जाओ. प्लीज इंटरैक्ट गाइस. इंटरैक्शन होना चाहिए. यस और नो. लाइक स्कूल डेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में वी यूज्ड टू डू इंटरैक्शन विद आवर टीचर्स एंड ऑल, राइट? यहाँ भी वैसे है, ओनली द मोड इज ऑनलाइन, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज सेम. ठीक है, तो आई एग्जीक्यूट दिस. गिव मी कंफर्मेशन गाइस. Does it take much efforts to unmute and say yes? Yes, yes. हाँ, ठीक है. See, Yes. तो क्वाइट सिमिलर इतना तो किया था तुम लोगों ने. चलो, ये टेबल भी क्रिएट हुआ. चलो क्विकली, सिर्फ टेबल क्रिएट नहीं, उसके अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करके क्वेरीज भी सॉल्व करने हैं, राइट? नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड टेबल, दैट इज प्रोडक्ट्स टेबल. This also I'll copy paste. See, write a query to create products table with product ID as the primary key, product name, category, price, and stock quantity. हर एक के लिए दिया है, लाइक ये इंटीजर चाहिए, ये डेसिमल चाहिए. ओके, तो समथिंग इज बाय योर नॉलेज ऑल्सो. नॉलेज मीन्स अपने कॉमन सेंस. अपने कॉमन सेंस से भी डिसाइड करना है कि किसको क्या डेटा टाइप देंगे. तो दिस इज आवर which phase? Schema designing. We are designing the tables yet. अभी tables design हो गए एक बार. Afterwards, we'll start adding records in it, and then we will perform analysis on it. Right? So we are creating table products. Okay. In that, the first column is product ID. Product ID, if you want integer, or you want to give a fixed pattern that every product number should start with P only, it is up to you. दे सकते हो, वहां लाइक क्लॉज में दे सकते हैं दैट चेक वेदर प्रोडक्ट आईडी स्टार्ट्स विद P%. गेट? तो जैसे देना है तुम्हारा चॉइस. इंटीजर ही रखना है, इंटीजर. प्राइमरी की यहां भी ऑटो इंक्रीमेंट देना है, दे सकते हो. एज दे हैव नॉट मेंशन, अप टू यू. या फिर प्राइमरी की नहीं देना है, सॉरी ऑटो इंक्रीमेंट, देन यू कैन टेल दैट स्टार्ट द प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम 1000. तो हर एक प्रोडक्ट को, या 1001, तो every product will get ID like that, 1001, 1002. Okay, so we will tell this to the AI when it will generate synthetic records. See here, this I'll give 100, not null. Then we'll take category, where 50 देता हूं, not null. Then price, decimal they have said 10,2, and default you want 0, तुम्हारा choice है. अगर आपको चाहिए कि प्राइस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, 0 अलाउड नहीं, कम से कम 0 से ग्रेटर ही चाहिए, तो दैट कंडीशंस यू कैन गिव. ठीक है, तो आई एम नॉट पुटिंग दैट एक्स्ट्रा कंडीशंस नाउ. देन स्टॉक क्वांटिटी, हियर आल्सो इंटीजर. इसको भी अगर आपको एक्स्ट्रा कंडीशन देना है, दैट check whether that quantity is 0 and more than 0, no negative quantity. So all that are the extra things. Generally, these are asked in interviews, like how I'll add that constraints. Okay.
तो these extra constraints they have not told you. Basic से बोला है कि create a product table with product ID as primary, then product name not null, category price and stock quantity. ठीक है? तो done with this, I'll create this table also. After this, we will create third table. Third table is the orders table. ठीक है? Write a query to create the orders table. Ensure it includes order ID as a primary and order table is linked to customer also and product also. Means in short, customer's primary key is a foreign key here and product's primary key is a foreign key here. Because how we will come to know that this order is placed by which customer and this is the order for which product. ये ऑर्डर किस प्रोडक्ट का है और ये ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस किया, तो आपको वो लिंक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की. ठीक है? तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर टेबल कॉल्ड ऑर्डर्स टेबल. ठीक है? सी, create table orders in which first will be order ID as a primary key. So I'll take here integer primary key. Here you can put auto increment. You want every new order should get a next order number. Generally, real life practical systems जो होते हैं वो orders ऐसे order number 1 2 नहीं देते. They generate some random numbers, unique random number. ऐसे 6 digit का नंबर होता है, 8 digit का. कुछ systems जो होता है ना, some system वो उसके आगे year, month and फिर वो number लगाता है, like that. 2026, ओके, 07 एंड फिर 0001 ऐसे नंबर्स जनरेट करते हैं. करेक्ट? जैसे 2026 मंथ का ही ईयर का 7th मंथ का ही सेकेंड ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर नंबर्स भी जनरेट होते हैं. तो इट इज दैट वो रिस्पेक्टिव सिस्टम ने तय किया है कि हमें कैसे ऑर्डर नंबर्स जनरेट करने हैं. हियर वी आर जनरेटिंग ऑटो इंक्रीमेंट. ठीक है? देन वी हैव कस्टमर आईडी. अभी फिलहाल तो इंटीजर रखूंगा. Product ID, integer, but it is a foreign key. We will add it later. Order ID, date and time. And here also, if you want, I'll put default current timestamp. Then we have quantity, how much quantity that product is ordered. And last is total amount, which will be decimal again. ठीक है? And then we have to add that foreign keys. ये customer ID foreign key है, product ID foreign key है. तो from the above list, who is your foreign key? Customer ID. तो at the end, that is called as table level constraint. याद है ना? Column level constraint भी होता है, table level. तो I'm adding a table level constraint. Foreign key. Who is the foreign key? Customer ID. And it is referencing which table? Customer tables, customer ID. मीनिंग समझ रहा है कि ये टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो ये फॉरेन की है, बट वो वैल्यू कहां से ले रहा है? कस्टमर टेबल के प्राइमरी की से. कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की वैल्यू यहां यूज होगी. Get it? And same way we'll create one more foreign key for product ID and it is referencing products product ID. अब मैं कौन से कंस्ट्रेंट्स नहीं डाल रहा हूं. आई एम नॉट एडिंग द कैस्केडिंग रूल्स. क्योंकि मुझे नहीं चाहिए. मीन्स मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कस्टमर डिलीट हुआ तो ऑटोमेटिक ऑर्डर डिलीट होना चाहिए. कस्टमर डिलीट करने गए तो ऑटोमेटिक ऑर्डर डिलीट होना चाहिए. तो फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड. तो आपको चाहिए तो यू कैन ऐड दिस, बट आई एम नॉट एडिंग दैट कंस्ट्रेंट. ठीक है? ओके. नाउ टेल मी कंफर्मेशन दो कि ऑर्डर्स टेबल भी
क्रिएट किया है आपने। ओके, आई एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, चलो अब मुझे क्विक कंफर्मेशन दोगे तीनों टेबल्स रेडी है? टेक एफर्ट्स ऑफ अनम्यूटिंग, सेइंग यस, सेइंग नो। नो बोला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग फॉर यू गाइस, सब तुम्हारे लिए चल रहा है, क्योंकि मेरा तो फीस आ गया है, ये समझ लेने का। सर ने तो फीस ले लिया, तो अभी जो कुछ चल रहा है वो हमारे लिए चल रहा है। तो प्लीज अनम्यूट एंड टॉक विथ मी, बोलो। यस, बन गया है सर हमारे टेबल्स। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं विथ एडिंग द रिकॉर्ड्स। एंड मैंने ये कंसेप्ट भी दिखाया, लाइक ऑर्डर टेबल में कैसे, लाइक ऑर्डर आईडी 1 है सपोज, तो यहाँ कस्टमर नंबर 5 रखा है, प्रोडक्ट नंबर 1000, गेटिंग, फिर ऑर्डर डेट रहेगा जो भी है, ठीक है। एंड जितना क्वांटिटी, दो क्वांटिटी मंगाया, प्राइस 5000 है या 50,000, वट एवर। तो व्हाट डज दिस से, दैट दिस इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर 5 फॉर प्रोडक्ट नंबर 1000। तो ये प्रोडक्ट 1000 वापस किसी दूसरे ऑर्डर में आ सकता है। There can be another order in which 1000 can come, and there can be another order which in which customer 5 can come. जैसे सेकेंड ऑर्डर वापस कस्टमर 5 ने ही दिया है, बट प्रोडक्ट 1010 के लिए प्लेस किया। कैन इट हैपन? जस्ट बोलो यस नो, हो सकता है कि नहीं। सेम कस्टमर इज प्लेसिंग ऑर्डर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, और सेम प्रोडक्ट इज देयर इन द अनदर ऑर्डर। Yes, it can happen. इट कैन ना, इट कैन कर, तो मीन्स कंसेप्ट यू हैव गॉट। ठीक है, तो ऑर्डर टेबल भी क्रिएट, चलो अभी सैंपल रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो वी विल गो टू द फोर्थ क्वेरी। Fourth query, they have said insert 5 diverse records in customers table. Include some members and some non-members. Members and non-member में समझा ना ये, इनका मेंबरशिप स्टेटस दिया था ना, वीआईपी, रेगुलर, प्रीमियम, है ना। तो डिफरेंट टाइप के चाहिए। Instead of 5 we will add some more. तो what I do is, see, मैं अभी सबसे इजी टेक्निक, ये जो कस्टमर टेबल हमने क्रिएट किया है, ओके, दैट I'll go to my AI tool, whichever. I do maximum work with only chat GPT. कुछ लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि एक ही एआई टूल से आप कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग 10 एआई टूल्स की तरफ जाते हैं। देयर आर सम टूल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, जैसे अगर आपको कुछ अच्छे प्रेजेंटेशन ही करने हैं, अच्छे images प्रोड्यूस करने हैं, तो देन देर आर अदर लाइक नैपकिन एंड ऑल। प्रेजेंटेशन करना है तो गामा के लिए जाना चाहिए। बट जो कोडिंग रिलेटेड है, उसके लिए चैट जीपीटी इज वेरी मच सफिशिएंट। ज्यादा से ज्यादा जेमिनाई को आप जा सकते हो, या क्लॉड है, यू कैन ट्राई, बट मैक्सिमम आंसर्स आई गेट विद दिस ओनली। ठीक है, देखो यहां मैं इधर ये पेस्ट कर दूंगा। ओके, द टेबल स्ट्रक्चर, जो हमने टेबल बनाया ना, वो टेबल का स्ट्रक्चर पेस्ट करूंगा, एंड आई जस्ट गिव इंस्ट्रक्शन टू इट दैट प्लीज generate sample 20 records। 20 customers हम बनाएंगे, generate sample 20 records, okay, and give instruction for joining date। Otherwise what it will do, it will insert 20 for today only, आज के ही सब 20। तो ऐसा नहीं है, फिर हमारे क्वेरीज सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो वी विल टेल दैट प्लीज कंसिडर डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट्स। ओके, ऐसे इंस्ट्रक्ट देता हूं, लाइक कंसिडर डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट्स, दैट्स ऑल, बस और कुछ ज्यादा नहीं बोलना है इसको। बाकी का तो उसको समझ रहा है ना क्या यूज कर रहा है। लाइक मेंबरशिप स्टेटस, इट नोज कि थोड़े कस्टमर्स वो वीआईपी का लेगा, थोड़े रेगुलर, थोड़े प्रीमियम, उतना इंटेलिजेंस है उसके पास।
तो now it will generate and give you 20 insert query. Actually insert हमें करना है. अगला क्वेश्चन वो है. After this three table, the fourth question is that only, that insert five record. So actually we are supposed to insert, but we are taking the help of AI, so that AI हमें ऐसे sample record generate करके देगा. See, has it produced some 20 sample records and dates अलग अलग लिए हैं. कुछ 24 का है, कुछ 25 के है, अलग अलग month के है. Then some are in premium, some are in regular. Okay guys, and customer ID auto generate किया. And names अभी डिपेंड करता है कि तुम्हारा तुम्हारा चैट जीपीटी और मेरा चैट जीपीटी अलग नहीं है, एक ही है. All are requesting to the same server, but it takes the past knowledge of your chat. आपने उसके साथ पास्ट में कैसे चैट किया है ना, वो नॉलेज को रेफर करके ये नेम्स प्रोड्यूस. तो जैसे इन माय केस ऑल इंडियन नेम्स आर जनरेटेड. नो गारंटी इन योर मशीन. इट मे जनरेट ऑल द वेस्टर्न नेम्स आल्सो, एलिस, बॉब एंड जॉन, जॉन डो. गेटिंग ऐसे नाम भी जनरेट कर सकता है. तो इट्स अप टू यू. ठीक है. तो कैन यू गिव मी कंफर्मेशन आपके इसमें भी ऐसे जनरेट होकर आए हैं या नहीं? ओनली अदिति आंसर्स प्लीज. बाकी लोग भी आंसर करो गाइस. So has it generated a insert query for customers? Insert into customers. Column names there. Why I have mentioned column name? Because customer ID is missing. Values and then जितने records insert कर रहे हैं करते जाओ. Each set of value के बाद एक comma है. देखो एक record दे दिया, comma next record, comma next record. ठीक है. Now we will run this insert query. Okay. Execute. See, around 20 records it has inserted. Okay, guys. If it is done, please give me confirmation so that we can produce, we can move ahead to produce synthetic records for products. Then for orders, तीनों के लिए records generate कर लिए. Now we will proceed with solving the queries. Whatever analysis they have told you to do, that we will start doing it. ठीक है. चलो, all of you, those who have joined, अंकित ने ज्वाइन किया तो अंकित बोलो you have done. Then विक्रांत ने ज्वाइन किया रहेगा तो विक्रांत बोलो. अदिति ने किया रहेगा तो अदिति. फजल ज्वाइन हुआ है कि नहीं पता नहीं. I'm inserting the data. Just give me 2 minutes. I'll come. ओके. टेबल क्रिएट हुआ है तो जस्ट वो टेबल का स्ट्रक्चर पेस्ट करो एंड देन गिव द इंस्ट्रक्शन. गिविंग प्रॉम्प्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे प्रॉम्प्ट देते हो उसके ऊपर है. While giving prompt, just give instruction that please consider different joining date. अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया ना मैंने चैट जीपीटी को, तो व्हाट चैट जीपीटी विल डू, इट विल जनरेट 20 कस्टमर्स, बट सबका रजिस्ट्रेशन डेट आज का ही ले लेगा. ऑल गेटिंग, बिकॉज इट विल टेक डिफॉल्ट ना. देखो इधर डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प है. तो व्हाट चैट जीपीटी विल डू, इट विल जनरेट एंड गिव यू 100 रिकॉर्ड्स, सॉरी 20 रिकॉर्ड, बट सबके लिए ज्वाइनिंग डेट क्या ले लेगा, डिफॉल्ट. So when you will run that 20 insert query records, it will take for everyone current joining date. So what will happen? Below there are some queries in which they are telling that display all the customers who have joined in year 2024 or those who have joined after 2025 or after this date or before this date. So that you won't be able to solve. क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे टेबल में सब एक ही दिन ज्वाइन हुए हैं.
यस और नो, इसलिए मैंने वो जस्ट इंस्ट्रक्शन दिया. Then we will move ahead with adding product records. ठीक है? Shall we proceed with creating products, sample product records? No, if you're lagging, if you're not able to do, please instruct करो मुझे. See. Now I'm pasting, what I'm doing, I'm pasting products record and try to create some 50, as much more amount of record, you get good output. आपका analysis अच्छा होता है. स्पेशली जो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिस्ट, उनके लिए जितना ज्यादा डेटा होता है उससे ट्रेंड्स फाइंड करना, पैटर्न्स फाइंड करना, प्रिडिक्शंस करने के लिए ज्यादा अच्छा होता है. फ्रॉम द लेस डेटा वी कैन नॉट डू मच प्रिडिक्शंस. करेक्ट? जैसे इलेक्शन फोरकास्ट वगैरह में भी देखा जाता है ना, दे डू एग्जिट पोल एंड ऑल, तो वो सैम्पलिंग करते हैं ना अलग अलग एरिया से, एक फिक्स अमाउंट ऑफ लोगों का रिसर्च में रिस्पॉन्सेस लिए रहता है, फिर उसके ऊपर प्रिडिक्शंस किया जाता है. ठीक है? तो प्रोडक्ट्स टेबल आई हैव पेस्टेड एंड जस्ट आई एम गोइंग टू इंस्ट्रक्ट प्लीज जनरेट 50 सैंपल रिकॉर्ड्स. ओके, ये एक, और एक इंस्ट्रक्शन देता हूं दैट स्टार्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम 1001, तो सबको 1001 1002 ऐसे दे देगा. ठीक है? सम इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू गेट गुड डेटा. वो सिंथेटिक डेटा भी है, वो रियलिस्टिक डेटा लगना चाहिए. ये हाइपोथेटिकल डेटा जनरेट है, बट इट शुड लुक एज इफ इट्स अ रियल डेटा. करेक्ट? तो प्लीज जनरेट 50 सैंपल रिकॉर्ड्स. देन स्टार्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम 1001. Okay. Also consider two or two to three or three to four categories. Okay. Also consider three to four categories. तो वो अलग अलग कैटेगरी, एक्सेसरीज लेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लेगा, वट एवर. ठीक है गाइस, आई शूट दिस. सी, 50 रिकॉर्ड्स जनरेट हुआ है. उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के है, कुछ होम एंड किचन है, कुछ क्लोथिंग के है, सम स्पोर्ट्स है. ठीक है? तो दिस वे, एंड कैन यू सी इट हैज स्टार्टेड विथ 1001 1002. ओके, product name, product category, price, and quantity in stock. Now, whatever this products are generated, that will just paste it here in our MySQL workbench, and I'll just run this. Okay, when I run this, has it generated 50 records? Okay, quick confirmation dete jao guys. And now we have to generate orders. Orders be good amount of orders, 100 orders, 200 orders generate karo. And tell that please consider the previous products and the customers. तो वो previously generated customers and previously generated products, उनको ही लेके orders के combinations बनाएगा. Get it? I'll tell you how to instruct. उसको कैसे instruction देना है वो बताता हूँ. But उसके पहले confirmation दोगे, products भी create कर लिए अपने. And at the end, if suppose you are unable to anything, then please tell me, I can paste this for you people in the group. ये जो भी चीजें की है वो हम ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट आप देख के वापस अपने आपको जब भी टाइम मिलेगा यू कैन ट्राई. बट प्लीज बी फ्री टू टेल, डोंट हेजिटेट, देयर इज नो प्रेस्टीज इशू.
यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि सर क्या बोलेंगे, सर को क्या लगेगा, नथिंग लाइक दैट। ठीक है। नाउ वी हैव टू जनरेट सम ऑर्डर्स। ओके गाइस, तो आई कम टू माय एआई टूल। ठीक है। नाउ हियर आई इंस्ट्रक्ट, इसको इंस्ट्रक्ट कर देता हूं। व्हाट, प्लीज generate at least 250 to 300 orders। गुड अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे तो आप लोग उसके ऊपर क्वेरीज भी अच्छा देख सकते हो। सो आई गिव लाइक प्लीज जनरेट 250 to 300 sample records। ओके। एंड ऑर्डर डेट भी अलग अलग लो, नहीं तो यहां क्या करेगा, एक ही दिन के सब ऑर्डर्स, सब 300 ऑर्डर्स एक दिन का ही ले लेगा। Why? Because for the order date we have given current timestamp. So we'll instruct that please consider different order dates. Okay, consider different order dates. Okay, this is done. And one more thing we can say, like refer previous generated customers and products. So that क्या करेगा, जो ऑर्डर्स जनरेट करेगा उन ऑर्डर्स में प्रोडक्ट नंबर वही लेगा जो प्रीवियसली जनरेटेड है, एंड कस्टमर नंबर्स भी वही लेगा जो प्रीवियसली। मीनिंग अभी ये जो ऑर्डर्स जनरेट करके हमें देगा, in that it will take the product from that 50 products and the customers from that 20 customers। अंडरस्टैंडिंग? वो जो 20 कस्टमर्स है उनमें से ही कस्टमर्स लेगा, एंड वो 50 प्रोडक्ट्स है उनमें से ही प्रोडक्ट्स लेगा। इफ आई इंस्ट्रक्टेड, so refer previous generated customers and products। Okay guys, I hope this is sufficient। I'll shoot this query and now it will generate and give you। अभी इसने अराउंड 275 दोनों का मीन लिया, बिकॉज आई सेड प्लीज जनरेट 250 to 300 सैंपल, तो उसने उसका मिडिल लिया, दैट इज 250। एंड कैन यू सी ये जो ऑर्डर्स है, आर दे ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेट्स? ये कुछ 26 का है, कुछ 24 का है। ओके। एंड ये जो कस्टमर्स है, दे ऑल आर फ्रॉम दैट प्रीवियस 20 कस्टमर्स ओनली। एंड ये प्रोडक्ट्स जो है जिसके लिए वो ऑर्डर प्लेस हुआ है, they are from that 1001 to 1050 only। उसके बियॉन्ड नहीं है। गेट इट? इट्स जनरेटिंग स्टिल, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा जनरेट कर 250 टू 75 ऑर्डर्स। ठीक है। तो अभी ये जो 275 ऑर्डर्स जनरेट हुआ है, दैट आई जस्ट पेस्ट। सॉरी, ये पेस्ट नहीं, हाँ अभी पेस्ट। ओके, सी ये अराउंड 275 ऑर्डर्स के रिकॉर्ड्स हमें बना के दिया है। This whole thing I'll select and execute it। As ये 275 है, it is lengthy। ठीक है। ये पूरा select किया and then I'm executing। Can you see? 271, 271 ही किया, 275 भी नहीं किया उसने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई इशू नहीं। बिटवीन 250 to 300 रिकॉर्ड्स बना के दिए। दीज आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये कस्टमर का आईडी है, ये प्रोडक्ट का आईडी है। तो कस्टमर 7 ने 1023 ये प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है। ओके, अब मुझे ये कंफर्मेशन दोगे तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं कि यस, तीनों में हमने क्या कर दिया है,
सैंपल रिकॉर्ड्स ऐड किए. Here they have just said add 5 sample records in customer, 5 in product, 5 in order. But हमने एक big amount का किया है. 20 customers, 50 products and around 250 to 300 orders. ठीक है? ओके, तो मुझे कंफर्मेशन मिलेगा तो बेटर रहेगा. और यू आर स्टिल डूइंग इट, जो भी है आप स्टिल कर रहे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जस्ट टेल मी दैट. It's done, sir. Complete. No? All 3 tables you have added records. Sample proper generate Yes, किया है. yes. ठीक है? While generating sample records also you have instructed accordingly. Okay, तो चलो. If this is done, then you can continue solving next commands. तो हमने 6 तक complete किया. 3 table create किए, तीनों में records हैं. Seventh one is saying add a new column named phone number. एक नया कॉलम ऐड करो कॉल्ड फोन नंबर टू द कस्टमर्स टेबल यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड. ऑल्टर याद है ना कमांड? इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो सीखा उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेरीज है गाइस. दिस इज व्हाट एप्लीकेशन. कल तक मैं सिर्फ कमांड सिखा रहा था, ये कमांड है, ये इस जगह पे यूज. अभी उन सब कमांड्स को ये क्वेरी को सॉल्व करने के लिए यूज करने आना चाहिए. तो हियर इट इज योर स्किल. ठीक है? तो कौन से टेबल में अगर आपने डिस्क्राइब कस्टमर्स किया, ओके, तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर टेबल. ये बताया हुआ है. ऑल्टर टेबल के समय ही मैंने ये डीएससी पढ़ाया था. देखो, कस्टमर आईडी, नेम, ऑल दिस थिंग, मेंबरशिप स्टेटस, राइट? ओके, नाउ what I'll do is I'll alter the table, alter table customers, add column. Which column they have told to add? Phone number, right? Phone number वेरकेट पेन दे देता हूं. ठीक है? बस दैट्स ऑल. उसको नॉट नल वगैरह रखना है तो रख सकते हो. रन दिस कमांड. ओके, अभी अगर आपने डिस्क्रिप्शन देखा कस्टमर्स का, डिस्क्राइब कस्टमर्स, कैन यू सी वन मोर कॉलम फोन नंबर इज एडेड. एक नया कॉलम ऐड हुआ है फोन नंबर. ठीक है? राइट. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम 8th क्वेरी, 8 से आगे के क्वेरीज सॉल्व करेंगे. तो उसके पहले अगर कुछ लोगों का टेबल्स नहीं क्रिएट हुआ है, रिकॉर्ड्स नहीं ऐड हुए हैं, तो वो कर लो. चाहिए तो मैं ये सब कुछ उधर पेस्ट करके रख देता हूं ग्रुप में फॉर योर रेफरेंस. चलेगा गाइस? Yes, sir. ठीक है. तो फॉर टुडे वी विल टेक अ पॉज हियर ओनली एंड टुमारो 8 ऑनवर्ड्स इसके आगे के क्वेरीज सॉल्व करेंगे.